जीरो होने में ठंडा है? ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. So last class we were studying this sloka. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते संगोस्तु akarmani. So you have the right for action and not for the fruits thereof. And then, so therefore, let not the longing for fruits, karma phala hetur, let it not be the motive for your actions. And finally, he says, don't become attached to the idea of inaction. So this is very, extremely important, is it not? कई बार कोई साधु होने के लिए योगदान करते हैं. So what is all this karma and all? चुप बैठने अच्छा है. चुप बैठ नहीं सकते, because no, physically you may restrain yourself from action, लेकिन that doesn't mean that you are not active. You are much more active mentally. कई बार ऐसे ही सोचते रहते हैं, समय निकल जाता है. So that is not correct. So actually, that's what it's a very, very difficult concept. क्योंकि कोई ही उद्देश्य के बिना तो काम नहीं हो सकता है. There should always be a big motive behind work. But so he is not saying work without any aim. Aimless work और जैसे वैसे करो ऐसे नहीं बोल रहे हैं. Supposing you want to arrange a program, a class, अरे ठीक है, जो आएगा आएगा, जो ना आएगा ना आएगा, यार ठीक नहीं है. That's not the way. Do it in the best possible manner. जो करना है कर्म में पूरी तरह मन लगा के, बट सो इसमें उसकी सफलता के लिए, बट दैट सफलता शुड नॉट बी माइन. मेरा नाम, मेरा यश, मेरा कीर्ति, मेरा सब तारीफ करेंगे, मेरा इससे मिलने वाले हैं, मेरे पैसे मिलने वाले, दूसरा में नो. सो वॉट एवर वी डू द वर्क, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, उसके लिए जितने प्रयास करना, एवरीथिंग विल बी डन. बट there will not be any idea of इससे जो फल उत्पन्न होगा वो मैं ही ले लूं पूरा. That should not be the attitude. So you don't always say that oh यही इससे यही रिजल्ट होना चाहिए, इससे यही मिलना चाहिए. So don't work like that. So so many youngsters come, oh महाराज जी मैं तो इतना प्रयास किया सिविल सर्विस में नहीं हुआ. अरे why do you say like that? You have gained so much. क्या क्या फायदा हुआ? I used to tell them, first of all, now you have the ability to study for number of hours. वो पहले नहीं करते थे. अभी एक साथ बैठ के इतना पढ़ने का मन, इतना एकाग्रता, एक जगह पे बैठना बहुत आ गया आपका अंदर. अब बहुत सारा पहले समय कैसे आपका चला जाता था in social media. Now you have cut off everything and you are able to, and you have studied some new subjects, you have acquired new knowledge. So he said all that will help you in somewhere else. Moreover, what is the guarantee that even if you had got selected, you would have been successful? There are people who regret all their life
जिंदगी भर ऐसे ही सोच रहे मेरा क्यों ऐसा आया, क्यों ऐसा आया, क्यों ऐसा आया, because it was not there meant for them. So ultimately, so if you believe in all that, then whatever you do is always a gain. जो भी आप प्रयास करते हैं उससे आपका तो अच्छा होना ही है. बट इफ यू नैरो इट डाउन इन टर्म्स ऑफ ऐसे ही होना चाहिए, सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, इफ यू टर्न इट लाइक दैट एंड इफ यू वर्क विद दैट मोटिव, दैट विल ब्रिंग यू अटैचमेंट. वही नहीं होने में गुस्सा, नहीं होने में डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, तनाव, तकलीफ, बहुत कुछ. अरे ऐसा सोचा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अभी क्या करूं, अभी क्या. नो, आई डिड इट. मैं प्रयास किया, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कुछ करना नहीं. मैं तो मेरी तरह जितना करना मैंने प्रयास. कई बार होता है ना, यू डू एवरीथिंग, यू पुट ऑल योर एफर्ट, फाइनली द रिजल्ट डजंट टर्न आउट लाइक दैट. सो इफ यू हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग इससे मेरा है फायदा, मेरा है फायदा, देन यू विल बी इन अ डीप स्टेट ऑफ डिप्रेशन. But you have done your job honestly, with great commitment and sincerity and एकाग्रता, ठीक है, अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जितना संभव किया. Not only that, you see, supposing you put up a nice pandal, everything is done, and a big function. हाँ, 2-3 घंटे के पहले ऐसे आंधी तूफान अचानक कहाँ से आ गया, प्रिडिक्टेड भी नहीं था, वेदर फोरकास्ट भी नहीं था. कितनी बार होता है. देन व्हाट डू यू डाई. नहीं, मैं तो किया, ठीक है, देन दूसरी जगह पे क्या करें, कैसे एडजस्ट करें, कैसे उसके संभालें. सो दैट इज हाउ. देन अदरवाइज वील, अरे इतना पैसा खर्च किया, सब बर्बाद हो गया, अभी क्या होगा. Then you invite more trouble, more disease, more depression, more blood pressure, everything. No need. So he says, do everything with great sincerity. So that's why he clearly says, माते संगोस्त अकर्मणि. ऐसे कर्म करने में कभी अच्छा होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, कहाँ से आसक्ति बन जाएगा. So let me not do any work. No, that laziness or indolence is Sri Krishna is not advocating. He says no, you have to do work tremendously with great intensity, enthusiasm, purpose. But the result can be in any way, can be favorable, may be unfavorable, जो भी हो सकता है. But everything is our favor only because I put in so much of hard work, sincere work. बस उतना है. So that's why it's a very extremely important shloka that you should work with great intensity, great sincerity. लोग बेकार कितनी स्कूल में जाते हैं, कई स्कूल में इतना करने के बाद भी ठीक नहीं कर रहे हैं, कितनी जगह पे जाने ही नहीं देते हैं, अंदर ही नहीं घुसने देते. सो ऑल दैट माइट हैपन, बट फ्रॉम आवर साइड वी हैव डन आवर बेस्ट. हम लोग का एक उद्देश्य था, यही संदेश बच्चों के पहुंचाना, टीचर्स के पहुंचाना, जो भी है. इन आश्रम ऑल्सो नाउ वी हैव डन from morning. Somebody is working, somebody is setting up the mic, somebody is doing the connection, everything. I get ready, I do all that, I try to look up the picture and come, and maybe some 10 people come, maybe some 30-40 people are attending online. किसी को आने की भी समय नहीं है. So for that, should I stop doing? No. Even if one person comes, if it is announced, we will do the class. If no one comes, only online attendance, फिर भी okay, because it's already announced. So you have to do your duty. That's why he says, don't look, अरे कितना लोग आया, सबको भेजो, सबको बुलाओ, सबको एक करो. नो नीड. जिनका जरूरत है वो आएंगे. गीता, फॉर whom are you doing? Doing for yourself. गीता पढ़ते समय you again try to understand what Sri Krishna is trying to say, what is his philosophy, how is it going to help in my spiritual life. So आप यही उद्देश्य हो. इसमें क्या है, कितने लोग आए नहीं आए, क्या फायदा है तुमको. मान लीजिए 200 लोग आए, बैठ जाए, क्या हो जाएगा. विल यू ग्रो अ पेयर ऑफ हॉर्न्स इफ 200 पीपल कम एंड सिट. हाँ वो करके 1 घंटे के बाद निकल जाएंगे, फिर क्या फायदा है. मेरे क्लास में 200 लोग आए, आई कैन एडवर्टाइज, बट दैट्स ऑफ नो यूज. आपका क्या हुआ. आप इतने दिन गीता पढ़ रहे हैं, आपका कुछ हुआ क्या. कोई पूछे, मैं क्या जवाब दूं. सो इट ऑलवेज शुड बी the idea that I have nothing to gain from that.
We are doing it as sadhana, whatever you do. So if all your work is like that, if your work is the idea, I have to purify my chitta, ताकि मैं चित्त से सब मलिनता दूर हो जाए, ऐसा चित्त में मैं भगवान के दर्शन व मेरा स्वरूप की पहचान संभव होगा. With that idea, if you do, if all your work is like that, it's for my own chitta shuddhi, my own improvement, then you are not attached to fruits, etc. Then he says how it is to be done. How such a work is to be done? Where you say that you don't have any attachment towards the fruits, but only you do it with all sincerity and do not be attached even to non-action. Now, what is the way? The next sloka he deals. He says, Yogastha kuru karmani sangam tektva dhananjaya siddha siddho samo bhutva samatvam yoga uchyate. Probably, I think, uh, the whole of Karma Yoga he sums up in his very one sloka. It's so beautiful. He says, Yogastha Kuru Karma. You do work being established in yoga with the mind steadfast in yoga. What is that? Not only that, he says, Sangham Tyaktva Dhananjaya. Give up all attachments. We'll explain, we'll look at it a little more closely. Siddha Asiddho Samo Bhutva Samatvam Yoga Uchyate. Siddhi Asiddhyo, whether there is a success or failure, Samo Bhutva, look at them with equanimity. Samatvam Yoga Uchyate. This unperturbed sameness in all conditions, this is called yoga. So yoga, there are a number of definitions. Sri Krishna gives number of descriptions for yoga in different places. But this is also a very important definition. He says, सिद्धि असिद्धि दोनों में सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा, दोनों के समान सोच के, if you can be like that, then samatvam yoga is very very difficult. कुछ अचानक ऐसा मिल गया. See, even success also completely turns our head. ऐसा हुआ, मेरा मिल गया. Similarly, failure, we all know. Failure terribly affects all of us. Success also can affect. So success may be, हाँ ठीक है, आया ठीक है, इसलिए क्या इतना नाचना क्या, तो हुआ अच्छा हुआ. So that samatva, see, why all one is linked to the other. First of all, he says, yogastha kuru karmani. Work, being steadfast or being established in yoga, be in the state of yoga and do work. That's the first instruction. So what are the needed for all that? Sangam tyaktva, giving up attachment. Because the next stage, what he says, samatva. Samatva is yoga, same-sightedness. Samatva in what? Siddhi na siddhi. Where success or failure. There are a number of opposites he will deal with. But here he is taking one particular opposite, siddhi and asiddhi, success and failure. Isme samatva. How will you get samatva and success and failure? Because we want this, I am doing this, I am purchasing for my daughter, my son-in-law, my this thing, my house, my property, my clothes, my... So, if you have all that, now, if it is mine all the time, if something failure means it's my failure, I have lost it, my money has gone, my property has gone, my health has gone, my relatives have gone, my relationship has broken. So, if all these things, we are always, when you have the idea that it is me and mine, it's not possible to be equanimous in siddhi and asiddhi. See, if it is mine, my exam, my promotion, my office, my next grade, my something. So if you're always, everything is linked to me and mine, for such a person, samatva is impossible. Samatva and siddhi na siddhi, how it is possible? Supposing, there is a nice, beautiful flower vase, it's in your hand. It falls and breaks. And we go and tell, after all, it's only
made of China clay, you can buy a new one, don't worry, it was nice. But what is there? After all, it will break one day, don't worry. But if it is mine, in my house, बस आप तो महाभारत लग जाएगा। कौन तोड़ा, क्यों तोड़ा, इतना असावधान है, जानते हैं कहाँ से ले आया, कितना इसका ये है, कीमती कितना है, कैसे नया लो, जाओ तुम्हारा सैलरी से काट दो। Why? If it is in excess hand, it is made of China clay, it is breakable. It is in my hand, it is loha or golden, it is unbreakable, it cannot fall. Why? Because me and mine. So the moment you say it is me and mine, then that is called attachment. What is attachment? What is the Sangha is asking? Sangham tyaktva dhananjaya. What is the attachment is trying to give up? Asking you to ask Arjuna to give up? Me and mine. मैं और मेरा, सारा दुनिया ये मैं और मेरा की चक्कर में ही फंसे हुए। Whole world, whatever you see, wherever anything is happening, anything, even a small child, a little toy, अरे मेरा पापा दिया, इतना रोता, अरे I cannot give, I cannot give. Why? From that age itself, the terrible attachment. My toy, my toffee, my this thing, my papa, my mom, everything is my. From very birth is as if we are, the moment we take birth, or even before that, this me or mera sanskar pakadta hai hum log ka. So from the very first moment, that is constantly with us. So if that is there, you can never have samatva. In siddhi or asiddhi, how can you have equanimity? मेरा तो नुकसान हो गया भाई, आप क्या बोल रहे हैं, सिद्धि फिद्धि क्या बोल रहे हैं, मेरा इतना पैसा चला गया, आप बोल रहे हैं मैं गीता पढ़ा रहे हैं, मेरे को पैसे कौन देगा? That is because we think it's mine. But the fact is that आप मान लीजिए आप ऐसे करके क्या फायदा है, कुछ मान लीजिए हुआ, अपन यू कीप ऑन ranting, keep on shouting, keep on anger, किसी को मार रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, किसी को, क्या वापस आ जाएगा? जो गया तो गया, you cannot bring it back in any, and also कितना दिन आप रखेंगे? एक ही दिन आप भी तो चले जाएंगे, क्या साथ में ले जाएंगे? इतना अनिश्चित है, हम इतना कोई फ्लावर पास के लिए इतना चिल्लाते खुद ही हार्ट अटैक को चला गया 1 सेकंड में। अरे वाह, ये फ्लावर्स के लिए इतना चिल्ला रहा था बेचारा, खुद ही चला गया। What is the idea? So nothing is permanent. So does it mean that you will be careless? No. You will do everything carefully, everything to the extent possible. If something happens, then you will not completely lose yourself or be terribly disturbed or terribly, totally depressed, destroyed and in such a condition. No. वही समत्व है। सी समत्व मीन्स आप क्या दुकान में जाके, अरे भाई आप जो भाव आप ले लीजिए, आपका मन, मेरा तो समत्व गीता में कहा, आपका मेरे 1 केजी आलू दे दीजिए, आप जो 100, 200, 500 जो लेना ले बनेंगे, वही समत्व है, वही बुद्धत्व है, समत्व नहीं है। सो वी पुट एवरी एफर्ट देयर, ऐसे कितना है, दूसरी दुकान में क्या है, यहाँ क्या है, then you give it at the time. After that, बस जो आपका एक विवेक लगा के आप जो करना करेंगे, that is not so समत्व। और इन सिद्धि और असिद्धि, समत्व में doesn't mean जो ऐसा तोड़ दो, फेंक दो, एक कर दो, don't care anything. No, everything has to be done with greatest of attention. But इसमें इतना बनाया, इतना सजाया, लेकिन क्या हो गया? भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से सब हो गया, ठीक है। मैं क्या जानते हैं कहाँ से लिया? ये देख रहे हैं ना, ये फ्लावर वाज, ये कहाँ से आया, ये फूल कहाँ से लाया जानते हैं? 3 बजे में खुद ही चला गया, मंडी में जाके ले आया, ताकि एक तो सुंदर है खुशबू आएगा यहाँ, इससे मैं ले आया। कितना, मैं तो कल सारा रात नहीं सोया, अब जानते हैं सारा रात में काम कर रहा हूँ। यू डोंट हैव टू एडवर्टाइज। क्या जो अच्छा करने के लिए आपकी तरह जो प्रयास करना था, आप पूरी तरह किया। अभी आप भगवान की भरोसा, जो होगा अच्छा होगा। हम लोग इतना, हाँ, हर सप्ताह, कल भी जा रहे हैं हम लोग ऋषिकेश, बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 17 तारीख डेट बोल दिया, 17 अप्रैल उद्घाटन होगा, लेकिन अभी तक बहुत काम बाकी है।
मालूम नहीं कैसे होगा, लेकिन माँ के भरोसे से सोच रहा हूँ हो भी जाएगा। प्रयास तो करूंगा, जितना संभव करूंगा, 16 अप्रैल तक करूंगा, हो जाएगा तो माँ की कृपा। So, samatva is possible only if you think that, if you bring an element of otherness apart from me and mine. आप भी जो भी हो सकता है, भगवान की नाम देख सकते हैं, ये सबको, ये तो एक चैतन्य है और कुछ भी नहीं है, ये सब अलग अलग दिखावा है, कुछ इसके अंदर कोई सत्यता नहीं है, सत्य कुछ नहीं है, वो भी सोचते हैं। वॉट एवर इट इज, एनी आइडिया अदर देन आवर ओन अहंकार, आवर ओन डिजायर्स, आवर ओन मैं और मेरा, यही छोड़ के आप जो भी भाव से, हाँ एक वैसे ठाकुर बहुत सुंदर कहानी बताते थे, रामेर इच्छा, इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल आइडिया। संक्षेप में एक वीवर था, वो तो बहुत ही सज्जन आदमी था, बनाता था कपड़ा, यूज्ड टू वीव एंड से उसका इतना है रॉ मटेरियल्स का, इतना इसमें मजदूरी है, इतना मेरा प्रॉफिट है, यही भाव है, आप ले लीजिए। सब ले लेते थे, क्यों? सब जानते बहुत सज्जन आदमी है, झूठ नहीं बोलता है। सो इसे रामेर इच्छा है, राम जी की इच्छा से, कल तो राम जी का दिन है, राम जी भी आ गए आज, राम जी की इच्छा से इसका इतना ही है, इतना मूल्य है, इतना इतना मजूरी है, हर शब्दों में वो राम जी जोड़ देते थे। सब जाते बहुत सज्जन आदमी है, वो तो राम की भरोसा भी रहने वाले हैं, उसका मदद करो, सब अपना अपना ले लेते। वो तो ऐसे एक दिन कहाँ रात नींद नहीं आ रहा था, थोड़ा ठीक है, उल्टा कहाँ कोई जगह में बैठे हैं, ऐसे बैठ गया बाहर, उसमें कहाँ से 3-4 और क्या एक दल डाकू कहाँ से लूट फूट करके इतना सामान ले आया, उसका ले जाने की इसको जरूरत था, इतना ले नहीं पा रहे, इतना ले लिया था, आ जाओ, तो उसका बिठा दिया, ठीक है राम इच्छा से मेरा ले जा रहे हैं। गया, अचानक पुलिस आया, पुलिस केम एंड ये रॉबर्स सब अपना सामान फेंक के दौड़ भाग गया, ये बेचारा इसके पकड़ा, पकड़ के जेल में भर दिया, अरे तुम चोरी किया करके। फिर अगले दिन जज साहब पूछा, सब सारा गांव से लोग आके, अरे हुजूर ये इतना सज्जन आदमी है, कभी चोरी नहीं कर सकता है, क्या किया इन लोग? पूछ रहा, अरे बताइए आपका क्या कहानी है? बोला मैं रामेर इच्छा से वहाँ बाहर बैठा था, रात नींद नहीं आ रहा था, एक दल डाकू आए, जरा सामान ले आया था, मेरा ऊपर चढ़वाया, क्योंकि उन लोग का आदमी कम था, मैं ले आ रहा था, उसमें पुलिस आया, रामेर इच्छा से डाकू लोग भागे, रामेर इच्छा से मेरा पकड़ा गया, रामेर इच्छा से मेरे जेल में डाला, आज रामेर इच्छा से आपके मैं सामने हाजिर हूँ, नहीं नहीं आप जाइए जाइए। उसमें नहीं बोला आप मेरा छुड़वाया, नहीं बोला, यू रिलीज मी, रामेर इच्छा से मैं मुक्त होके जा रहा हूँ, यही हमेशा। देखो अच्छा में वही है, बुरा में ही है, कोई आया पकड़ाया वो भी रामेर इच्छा, कोई चढ़वाया वो भी रामेर इच्छा। सो of course it's a state of a very great, very extraordinary spiritually awakened person, jnani, that is different. We may not be able to do that much, but at least to some extent, to what extent we can reduce our this me and mine, मैं और मेरा इतना हम लोग का तंग दे रहा है, कितना कम कर सकते हो? एटलीस्ट एवरी नाउ एंड देन टू थिंक, अच्छा दिन भर में कितनी बार मैं और मेरा शब्द कितना बार व्यवहार किया, कितना चीज में मैं मेरा 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 बोलता रहा। कैन वी एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, ताकि ये अटैचमेंट थोड़ा कम हो जाए। एवरीथिंग मेरा ये चाहिए, मेरा वो चाहिए, वो चाहिए ना, मेरा नहीं चलेगा नहीं सब। सो ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ओनली ना। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आपका बहुत सिंपल खाना में भी जीवन चला जाएगा, 5 तारा होटल में जाके खाइए वो भी हो चला जाएगा, वहां से बीमार हो सकता है। घर का खाना अच्छा है, सिंपल दाल रोटी में आप स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, एनीथिंग इज, बट देन वी थिंक नो नहीं, वो नहीं मिल, दैट इज अटैचमेंट। वहां जाना, वही हम करूंगा, वहां ही मैं रहूंगा, वहां ही खाऊंगा, ऑल दैट इज ओनली साइन ऑफ अटैचमेंट। जहां भी है ठीक है, जो आया है रामेर इच्छा, भगवान की इच्छा, जो व्यवस्था। So if that is there, then you see, if you reduce this me and mine, then only it will be possible for you to take siddhi and asiddhi as same, as gain and loss as same.
the success and failure are same. Labha labho jaya jayo. Somewhere else he says, uses everywhere all these expressions. So in this yoga samatva, here he promotes the idea of siddhi and asiddhi, success and failure. So all that is because if you do like that, then it is possible for you to give up attachment. And once you give up attachment, then you'll have that kind of samatva, and then you will be in a state of yoga. Yogastha kuru karmani. And then again he emphasizes, Durene hi avaram karma, buddhi yoga dhananjaya, buddho sharanavanvicha, kripana falahetavaha. Then he says, this mere action is far inferior to action with mind poised in yoga, in evenness. See, durene hi avaram karma, buddhi yoga dhananjaya, the work done with buddhi yoga, established yoga, compared to that, बहुत दूर है कि अवरम कर्म, work done with desire for fruits. Therefore he says, Buddho Sharanam Anvich. So always, so please take shelter, seek shelter in the state of unperturbed evenness. Because those who seek, who work for the sake of fruits are really in a pitiable. उनके ऊपर करुणा होना चाहिए, कृपणा फल हेतव. क्यों? वो जानते नहीं है फल किसी तरह भी जा सकता है. बिकॉज वी डिजायर फल, डज इट हैपन? कई बार हम लोग सोचते हैं इतना नहीं किया, कैसे हो गया? हो गया. मैं नहीं भी जानता था, एक काम भी मेरा इतना नहीं आता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ सब सुंदर हो गया. सो एनीथिंग गुड हैपन, वी ऑलवेज ट्राई टू अप्रोप्रिएट टू आवरसेल्फ. मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया. इट्स नॉट सो. First of all, so many people have contributed. It's all happening because of so much. I always say, when you go to good institutions, good schools, आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एयर कंडीशन है, बहुत कुछ साधन है, फैसिलिटीज है, वेरी गुड टीचर्स, एवरीथिंग. डू यू थिंक दैट आपका पापा के पैसा भर दिया आप आगे? नो. The farmers who committed suicide have contributed for this school. People who have paid taxes, they have contributed. हम लोग का 8 करोड़ 9 करोड़ का जमीन हरियाणा गवर्नमेंट दे दिया 1 करोड़ 70 लाख में. वो क्या करे? हरियाणा गवर्नमेंट अपना जेब से दिया. So many taxpayers who have paid. After this, the property was purchased by the government, and then later on they have given it to somebody else. Government तो सिर्फ postman की काम किया, किसी के लिया, किसी को पहुंचा दिया. But so many people have contributed. Even the people who issued the orders have contributed. इसलिए हम सोच भी नहीं पाएंगे हम लोग एक एक कर्म के पीछे कितनी factors है. So many are involved, so many are contributed. That's why Gita always talks about the idea of yajna. Why? Because to acknowledge our indebtedness, मैं कितनी के प्रति मेरा ऋण है, मैं कितना लिया, सबसे लेते रहता हूँ. आज हम लोग सुबह उठ के यहाँ आया, कैसे संभव? कोई से खुलवाया, कोई साफ किया, रेडी किया, माइक रेडी किया, इंटरनेट लगाया, सब कुछ किया, उसके बाद हम लोग बैठ पा रहे हैं. So for every little thing you need the help of so many. कुछ भी सहज नहीं है. जो चीज हम लोग को सहज रहे, सहज नहीं. ऐसे बोल रहा हूँ, कैसे संभव? मैं क्या, मैं कोई लिया, कहाँ से खरीदा, करंट है, कनेक्शन है, टिक चल रही नहीं देखना. So every little thing involves so many. That's why Gita always talks about the idea of yajna, where you remember that how much you owe to everyone else. Nothing can be done by you alone. If you remember that, what will happen? A sense of humility will come to you. A घमंड कम हो जाएगा. मैंने किया, अब चाहे क्या, अब क्या किया? तो कुछ भी नहीं किया. So many people have done. आप उसके ऊपर अंत में कुछ लगा दिया, आप सोच रहे हैं आप ही किया. No, so many have done. What is your contribution? So when you understand that how small and how insignificant I am, then you become humble. Then you start thinking, अरे इसके ऊपर इतना मेरा कोई ये ना जरूरत नहीं है. Why should I be so attached? So many have done. It will also go one day. It will also may break. Somebody may take it away. I can give it away also.
So I should always think that me. No. So, all this, the more and more we try to understand the nature of work itself. कर्म का तरीका कैसा है, क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, कैसे कैसे होता है, how is it happening, how so many are involved. When you understand every small little work involved, में this किताब, इसके पीछे कितने लोग काम करने में किताब रूप बन के आता है, प्रिंटिंग, कंपोजिंग, राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, एंड देन सेलिंग, एंड देन ब्रिंगिंग इट टू द क्लास. कम से कम उसके अंदर 50 कोई ऐसे कोई क्रम है, उसके बाद में होता है. So, if you understand the overall involvement, the overall factors in any karma, then you will become definitely humble. मेरा इसमें सिर्फ एक धागा बुलाना, और कुछ नहीं है. मेरे पीछे कितनी लोग इसलिए इतना किया. So when you understand the magnitude of the factors involved in any action, then automatically you start thinking, इसमें सफल होना, असफल होना, सिद्धि और असिद्धि, इतनी लोग तो किया. Just as me, so many are also affected. The person who did the binding, he is not going to come and see whether the book is used or it is not used. इसमें सफलता असफलता वो क्या समझ में आएगा? But he is doing it. Day after day he is binding thousands and thousands of books. So, like that, if you see the magnitude of any small little thing, the factors involved, then you will become humble. मेरा कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ? So when you do that, you will become less attached. Then only it is possible for you to develop this samatva. So that's why he says, those who kripana palahetava, those who are working for the sake of the results only, fruits only, they are to be pitied because क्यों? पता नहीं है कहाँ क्या जाएगा. Suppose होगा करके then finished. All then the result is totally different. Then you are depressed, are totally in a state of shock. That's why he says, those who work with selfish gains are indeed pitiable. So he says, seek refuge in the state of unperturbed evenness. He says, Buddham Sharanam Anvicha. See, this one, Anvicha means it is seeking. You seek shelter, seek refuge in that buddhi, that evenness of mind, samatva, that kind of yoga. Then only you can work, because otherwise, merely working for the sake of fruit or that kind of work is far inferior to the work done with the mind poised in evenness. Not only that, no, you'll also find that even for the success of the work, if it is done properly, a little of this attitude is very necessary. Quite often, because of our attachment, because of our idea of appropriating the fruits, our own gains, quite often we end up doing it the wrong way. सुनता नहीं, मैं जानता हूँ, मेरा है, आपका क्या है? Then you end up doing something uselessly. But if you have a sense of little detachment, you bring in more perfection into work, more integrity, more calmness, more concentration, एकाग्रता. क्यों? आप जानते हैं, मेरा इसे अच्छा करना है, उतना ही मेरा. Pamireshwaran always used to give a very beautiful example. So there was somebody built a huge monastery, so many things in a Christian order. So everything was done by him. Whole thing was his creation. Start from scratch, from Jameen se leke. Then next day was a inauguration, big function. Previous day, they transferred him to another monastery. Otherwise, whole day, मैंने किया, यहाँ देखो, वहाँ देखो. Just like that, just the previous day. He always used to say this example. That's because they didn't want him to develop that attachment. It's mine, my creation. To help him overcome that, to help him not develop that kind of attachment, they sent him to some other place or some other monastery the previous day. If you have waited one day, सब उद्घाटन की बाद भी भेज सकते थे, but they did it purposely on the previous day so that he doesn't develop the attachment of mind. मैंने किया नहीं बोलेगा,
So that to save him from that attachment, they just transferred him the previous. अब ऐसे होने में इमीडिएट हार्ट अटैक. अरे बाबा मैं इतना किया, एक दिन मैंने नहीं, क्या होता था इन लोग का, इतना इतना कठोर है, इतना ही है, एंड यू नो डे एंड नाइट यू विल नॉट गेट अप. नो, किया क्या, मेरा क्या है, भगवान का काम करना था, कर दिया, खत्म. सो that is one idea, you know. And then he says, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम. What is kaushala in work? What is dexterity in yoga? Dexterity in yoga is karma kushalata. That is, you know, the skill in action. Skill in action is yoga. What kind of skill? बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते. Now he talked about siddhi na siddhi there. Now he's talking about the good and bad, effects of good and bad, sukriti and dushkriti. ये दोनों का in this place itself, you know, jahati, if we can abandon, iha jahati, if we can give up here and now itself, ubhe sukrita dushkriti. So the person endowed with unperturbed evenness of mind, उनका जो समत्व जो है, योग बुद्धि जिसके है, योग युक्तो, बुद्धि युक्तो, is buddhi is linked to yoga. That kind of a buddhi, such a person, sukrita and dushkrita, the good and bad actions, jihati, here itself he gives up, iha jihati. Tasmat, therefore, yogaya yujyasva. So therefore, you know, strive for this state of yoga. Yujyasva, you strive for this state of Tasmat, yogaya yujyasva. Yoga karmasya kaushalam. See, because you see, they're all, you know, one is linked to the other. So, you know, the good and bad, definitely, if anything good happens, we are very happy. If anything bad happens, we are unhappy. So, you know, everything is linked. Siddhi, asiddhi, sukriti, dushkriti. So, all these, you know, constantly keep producing attachments. Whenever it happens, you attach. But if you have the buddhi yukta, if you work with buddhi yukta, with that kind of evenness of mind or samatva, then you handle good and bad very easily. Sometimes when you go to the ashrama, somebody treats you very badly. अरे मैं आश्रम के लिए इतना किया, महाराज ने ऐसे सुना दिया. Then you become completely depressed. And another you come, Maharaj is giving 10 sandesh, 20 jalebi, 30 rasagulla, देते रहते हैं, आप खाने पर, अरे खाना है आपको, आप इतना करें, हाथ में इतना बड़े डिवोटी, अरे महाराज इतना करे तारीफ. So you know, sometimes can have, sometimes that way. अच्छा दिया, अच्छा ठीक है, महाराज गाली दिया, ठीक है, मैंने फिर अगले दिन आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा आश्रम है. महाराज कौन है? ठाकुर है, माँ है, स्वामी जी है, मैं आ जाऊंगा. महाराज कौन? वो आया 2 दिन बाद चला जाएगा, मैं आऊंगा. That is, you know, बुद्धि युक्त योगा. अरे भाई अरे बोला कल से नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, ऐसे आश्रम में क्यों नहीं आऊं? दैट इज नुकसान किसका है? आश्रम के है और आपका. So you know, if the buddhi is like that, if you do buddhi yukta karma, then obviously, you know, you have more of that evenness of mind, and evenness of mind has helped you to develop that samatva regarding sukrita and dushkrita, both the good as well as bad actions. Both are, you know, you just treat them alike, don't bother about them, you are not perturbed. So that is why he says yoga karma se called. So he says tasmat yogaya, you just try to get to that state of yoga. Then yoga karma se called. Yoga, dexterity or karma kushalata, that skill in action is yoga. What is the skill in action? This. Otherwise, you know, that was the problem for Arjuna. He was thinking that what will happen if these people die, it is bad. If I win, that is good.
all this good, bad, or siddhi, asiddhi. Constantly he was bothered by all that because he was thinking it is my war. I have to win. I have to lose. I will be responsible. I am doing all this. This is being done by me. Again, me or mera, me and mine. So that was constantly coming every moment of his life. He was constantly looking at that, and therefore he was very much perturbed. So if only he has this yoga buddhi, yoga yukti, buddhi yukta karma if we can do. That's why he says yogaya yujjasva. Try to develop that yoga so that you can be completely unperturbed under all circumstances. Siddhi asiddhi, sukruti, dushkruti, whatever happens, you're always prepared because you're only. Again, of course, the Lord also gives various types of attitudes with which it can be done. Can be as a Lord's servant, Lord's agent. He is making you do. You are only an instrument. He is everything. Or even from a totally Advaitic point of view, nothing is being done. It's all only Atman. It's all only that one Brahman or consciousness. It's all only mere pretenses, mere dikava hai. Actually, nothing is happening. In reality, nothing is true. They're all anitya only. So many attitudes are possible. But the idea is buddhi yukta karma. So that you have that evenness, you have that samatva, and with that idea, if you do, then you will not develop attachment. If you do not develop attachment, you progress in the path of mukti. And that is why, karma is to be done with kushalata, with skill. Otherwise, some people will give fruit cutting, 80% of the fruit will go away along with the skin. That is not skill. You must do at the same time, you can't leave skin also. What is the optimum? How much you must cut so that it tastes very good. Nothing is wasted. Nothing goes along with the skin. So boiling, boil ऐसा कर दिया, सब नीचे अंडा में सब पकड़ लिया. ऐसे boil करना कोई फायदा है? But it has to be boiled also. If it is not boiled properly, it won't taste good. So every year the karma kushalata is so important. Skill in action. That's because unless you do it with that kind of evenness of mind, no action can be performed properly. So Sri Krishna is saying, Asmat, yogaya yujjasva, yoga karmasu kaushalam. So many ways. Again, somewhere it says, sarvakar, mai sarvani karmani sanyasya adhyatma chetasa. It talks of adhyatma chetas. Nirashi nirmamo bhutva yujjasva vigatachvaraha. So, it's full of such ideas where how one can function in this world beautifully without being disturbed by the opposites or without by the success or failure or good or bad. Because ultimately the whole samsara revolves around what are called these opposites. सारे संसार में मान लीजिए सिर्फ अच्छा ही है, बस सिर्फ बुरा ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Supposing there is only bad, there is nothing good, then also life will go beautifully because no one would know what is good. Only when you know good and when you say something bad, the opposite, the dvanda is the main problem. When you have the opposite, there is a problem. If there are only Brahmajnas, nobody else, wonderful. If only Daku hai, no problem. But कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, then they always compare. ऐसा था, ऐसा है. ये ऐसा है, वो ऐसा है. मेरा ऐसा लग रहा था, अभी ऐसा लग. So always constantly this dvanda, this opposite, that is what is killing people. That is what taking us away from a true state of spiritual illumination. That's why Sri Krishna again and again says, be free from this dvanda. Dvanda vimukta. Be free from these opposites. So that's why again he gives pairs. Sukruti and Dushkruti, Siddhi and Asiddhi, Labha and Alabha, Jaya Jaya, Labha Labho Jaya Jaya, Jaya and Jaya, victory and defeat. So he constantly brings our attention to these opposites, Dvanda, where one against the other. So you be careful about that. That is what will really disturb you. ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु. ध्यान रखिए, कल तो सारा देश जो अयोध्या के उद्घाटन
अपना अपना ढंग से मना रहे हैं। कल आश्रम में भी शाम को 5:30 से 6:30 हम लोग राम नाम गीत गाएंगे और संध्या के बाद थोड़ा दिया जला के रोशनी डालेंगे ताकि हम सबको मन में जो अंधेरा है वो निकल जाए, so that we experience that light in our heart. Symbolic of that, we'll be lighting lamps outside, celebrating the advent of Ram Lalla in Ayodhya. Namaskar.